Hello, I'm Dr. Saniya Jafri from Sehat Kahani, and I've been associated with Sehat Kahani from quite a few months, and it has been a great experience. I welcome you all today to Sehat Kahani's live Ramzan session, Sehat O'clock. Topic I will be talking about today is managing sleep. So, managing sleep sounds challenging. I understand that in this holy month of Ramadan, when the office hours are tough and your routine becomes tough, and even for the children who are going to school and even who giving their exams, so it becomes challenging. But certainly, if you prioritize your routine and you regulate your sleep rather than staying up till sahur and just putting yourself, just tiring yourself and dehydrating yourself, if you prioritize your routine and if you regulate your sleep, it does it is certainly manageable. So how can we actually manage it? Like what are the tips to manage it? How can we consolidate the sleep? How like if you consolidate your sleep pre-dawn, like if you give longer blocks, if you sleep for 4 hours, 5 hours straight in a go, rather than giving short naps, then it will be quite helpful. And if you regulate your sleep, how can you regulate your sleep? You can regulate it by fixing a time, fixing one time. Like if you're done with all your iftar and your sahur and your iftari and your preparation of sahri and your Quran Sharif and your tarawiyah and your du'ain, and if you all when you're done with all this, when your dinner routine, everything, and even relaxing and exercising also, that's a key point to keep yourself active in this month. So fix one time, like 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. That's up to you. That's up to your routine. If you fix one time and go to bed on that time, it is quite helpful. Trust me, it really helps. Because you know what happened? If you go to straight sleep, like straight for 4 to 5 hours, there's a sleep pattern. For like 90 minutes, you go to deep sleep, and that's a must. And if you don't go to sleep for a longer period, and if you take short naps, that keeps you dehydrated, that keeps you lethargic, makes you tired. And this is like for longer duration is not helpful. So this is for the sleep thing. And also one more thing I want to add in the sleep pattern is, if you create a good sleep environment, like you turn off the lights, and also a very important point is your mobile should be off. You shouldn't be scrolling on your screens, and you shouldn't be watching any TV just before going to bed. एज आई सेड कि ये सब आपका रूटीन है जो आपको सेट करना है, आपको बनाना है, आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपकी क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है. आपने सब कुछ करना है, लाइक आपको खाना भी खाना है, आपको इफ्तारी भी करनी है, आपको इफ्तारी बनानी भी है, आपको ऑफिस भी जाना है. बट अगेन अलॉन्ग विद दिस, कैसे कोप करना है? तो दिस कैन बी ओनली डन बाय जस्ट थिंकिंग, सिटिंग एंड मेकिंग अ प्लान. बेसिकली थोड़ा फोकस करके थोड़ा सा टाइम दें और एक प्लान बनाएं, तो इट विल बी लाइक रियली हेल्पफुल. ऑल्सो, क्या आप सहरी में, व्हाट आर यू ईटिंग इन सहरी एंड व्हाट आर यू ईटिंग इन इफ्तारी? इट शुड बी अ बैलेंस थिंग. If you fill your stomach with a lot of carbonated drinks or with रूह अफ़ज़ा, with जाम शीरी, certainly वो दिल करता है. बट अगर आप एक साथ इतना इसको पी लेंगे और अपना स्टमक को फिल कर लेंगे, तो बिल्कुल लिथार्जी होती है. इट सडनली एक शुगर रश होता है एंड यू फील लिथार्जिक. सो ईटिंग गुड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद गुड स्लीप. अच्छा जी, और क्या करना है कि व्हेन यू आर डन विद ऑफिस वर्क, चाहे आप घर से कर रहे हो, चाहे आप अपना ऑफिस जाके कर रहे हो, बच्चे जैसे स्कूल से वापस आ जाते हैं, देन ऑल्सो यू टेक गुड 1 hour nap, 1.5 hour nap after coming from work, when you're done with Zuhr namaz and your asr namaz, before your asr namaz. इतना टाइम होता है बिकॉज रमज़ान में टाइम्स जो है वो रेगुलेट हो जाते हैं, टाइम जो है वो ऑल्टर कर देते हैं, थोड़ा डिक्रीज कर देते हैं.
और वर्किंग वर्कलोड भी थोड़ा-सा कम हो जाता है। सो आई थिंक दिस इज़ क्वाइट मैनेजेबल। सर्टेनली अगर आप उसको पैनिक होके क्रिएट करेंगे, पैनिक सिचुएशन बनाएँगे तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। मगर आप इसको अगर इसको लाइट उसमें एक्सरसाइज़ के साथ, अपनी रूटीन के साथ इसको ज़रा लेके चलेंगे तो आपके लिए ईज़ी होगा। ओके, वन मोर थिंग व्हिच इज़ क्वाइट हेल्पफुल। सुनने में थोड़ा-सा लगता है कि एक्सरसाइज़ करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है और इफ्तार के बाद सर्टेनली इवन लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग के साथ एक्सरसाइज ज़रा डिफ़िकल्ट होता है, बट अगेन when there's a will there's a way, and if you want to keep yourself healthy you will do it, and you have to do it. So exercise regularly is also a key. Okay, so I think we should now open up for question and answers. I am ready to answer all your questions and your queries. So please, may I have your questions here? One by one, I'll answer. Okay, so I will elaborate a little more on what to eat. See, in Sehri and Iftari, if you have a balanced eat, like balanced diet, how can you have that? Balanced diet is just a small word. सुनने में कि भाई बैलेंस डाइट करनी है और अच्छा खाना है, मगर क्या खाना है? खाने को तो जो दिल करता है वो तो हमें थका देता है, वो हमें लेथार्जिक करता है। जैसे हमने बात की कि फिज़ी ड्रिंक्स हैं, जो बच्चे दे आर रियली फॉन्ड ऑफ इट। इवन एडल्ट्स दे वांट टू हैव like they want to have any kind of cold beverages. uh, yes, I will come back again. ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि सबका दिल करता है कि कोल्ड बेवरेजेस हों और फिजी ड्रिंक्स हों, अट्रैक्टिव होती हैं, बर्फ़ डाल के ठंडा, जैसे ही रोज़ा खोलें फ़ौरन उसको लें। बट सर्टेनली दिस इज़ रियली बैड, रियली रियली बैड आफ्टर अ लॉन्ग फास्ट। ये बहुत बैड इम्पैक्ट देता है आपकी बॉडी के अंदर। सर्टेनली एक वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होती है, उससे पता है क्या होता है, जो ब्लड एकदम से जो स्टॉप होता है ब्रेन की तरफ भी और आपकी स्टमक्स और इंटेस्टाइन की तरफ भी, उससे ये होता है कि ब्लड फ्लो रुकने की वजह से एक जो बिल्कुल सडन एक बॉडी के अंदर एक टायर्डनेस और मसल फटीग और लेथार्जी जो महसूस होती है, वो जो you feel just drained out, completely drained out after इफ्तारी. A lot of people I have seen complaining कि बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इफ्तार के बाद, इवन नमाज पढ़ने की नहीं होती। तो दिस इज जस्ट बिकॉज कि अगर आप अपने स्टमक को फिल कर लेंगे पानी से, प्यास लग रही है एक साथ पानी पीते गए, तो दिस विल नॉट हेल्प। सो यू हैव टू अगेन खजूर से रोज़ा खोलें, गर्म पानी से रोज़ा खोलें, बहुत हेल्पफुल होता है। गर्म पानी सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, यू कैन मेक अ ग्रीन टी, यू कैन मेक अ कहवा, घर होममेड जो कहवा होता है, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियल। ऑल्सो आप कैफ़ीन अवॉइड करें। लोगों को होता है कि जी मैं सडनली जो है वो एक कैफ़ीन का एक वो गश देना है सो दैट वी आर अलर्ट। येस, यू कैन हैव इट, सर्टेनली दिल करता है और पीना भी है, तो आप यू कैन हैव इट, बट लाइक थोड़ा सा देर के बाद, हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद यू कैन हैव टी। Okay, and then again, what should you what should be your diet according in सहरी। अब पहले सहरी की बात कर लेते हैं, फिर वापस हम अफ्तार पर आते हैं। सहरी खजूर का intake should be very good, and having dahi, lassi, and fruits. Yes, paratha, eggs, protein intake in the form of eggs is amazing.
एंड आपका जो रात का कोई कोई सालन होता है, यू कैन हैव दैट विद रोटी. But paratha shouldn't be like too oily. It shouldn't be loaded with oil or ghee. It should be नॉट टू थिक. मोटे मोटे पराठे लोग बना लेते हैं कि भाई ज़्यादा खाऊंगा तो ज़्यादा मुझे देर तक जो है वो ये पराठा जो है वो पेट में पड़ा रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट लाइक दैट. वो कुछ उसका एक ड्यूरेशन है, वो उतनी ही देर तक रहेगा और उसके बाद वो बॉडी से निकल जाएगा. तो यस, लस्सी जैसे मैंने आपको कहा कि दही का इंटेक, इट हेल्प्स यू. जो आपको प्यास नहीं लगती बहुत देर तक. इलायची का इंटेक, अगर आप इलायची ऐसे ही खा लें तो वो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करता है. सौंफ का इंटेक, अगर आप जैसे बना के अपने पास अपने काउंटर पे रख लें, आप खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, घर में सबको दें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है. वो डाइजेशन में भी हेल्पफुल रहेगा. उससे आपकी जो एक लेथार्जिक फीलिंग होती है और जो फुलनेस की जो फीलिंग होती है ना, वो नहीं होगी. ओके, सो अगेन कि ये अगर आपका मील्स अच्छी होंगी, व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन सहरी एंड इफ्तार की बैलेंस मील्स पर? वो इसलिए कि अगर आपकी मील्स सही होंगी तो आपकी नींद भी सही होगी. एंड अगेन एज आई सेड कि यू शुड बी हाइड्रेटेड ऑल्सो. हाइड्रेटेड मीन्स पानी का इंटेक. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट होल सोल वाटर, जिसके लिए लोग ज़रा कम फोकस करते हैं. So, having 8 glass of water is a must. So I think we should start our question and answer session, and I'm open for it. You can send me your questions, and I will answer them one by one. Is it better to sleep after Fajr or best to skip it to stay fresh at work? Yes, as I said, that if you fix a routine and if you fix a time after iftar, जैसे अगर आप 11 से 12 बजे तक if you take a good sleep सहरी तक, तो सहरी के लिए तो हमारा 4 o'clock 4:30, इवन कुछ लोग अगर 5 तक भी उठते हैं तो उनके पास अच्छा टाइम होता है, वो आराम से खा सकते हैं. तो दिस इज गुड 4 to 5 hours स्लीप. एंड आफ्टर दैट आप अपनी नमाज पढ़ें और आप नमाज के बाद अपने अपने काम पे चले जाएं. दिस इज गुड. दिस इज रियली गुड. I can't sleep immediately after Sehri. What to do? सो दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल कि अगर कुछ लोगों के साथ होता है कि एकदम से खाना खा के वो एकदम से नहीं सो सकते. दैट इज़ ऑल्सो फाइन. आप अपनी जो आपकी रमज़ान की, आप ऑब्वियसली रमज़ान है, एक होली मंथ है, आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट भी लेना है. तो आपको दुआएं भी पढ़नी है, आपको कुरान शरीफ भी पढ़ना है. आप अपना रूटीन ही ऐसा सेट करें. एज आई सेड कि हर जगह जो है वो घूम फिर कर आएगा. रूटीन सेट करना, प्रायोरिटाइज करना. यू हैव टू मेक अ रूटीन. एंड आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से जानते हैं. आपको पता है कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए है और किस तरह से आपको लेकर चलना है उसको. सो दैट इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली ओके. अगर आप सहरी के बाद नहीं सो सकती हैं तो आप सहरी के बाद अपनी फजर की नमाज़ पढ़ें. नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपनी कुरान शरीफ पढ़ें. कुरान शरीफ पढ़ के अपनी कुछ दुआएं वुआएं पढ़ें. एट लीस्ट ये घंटा तो ले लेता है. एंड आफ्टर दैट नींद आ जाती है. अगर आपका ऑफिस है तो यू कैन गो टू ऑफिस. इफ़ यू हैव स्कूल, इफ़ यू कैन गो टू स्कूल. या कोई और होम बेस्ड आपकी जॉब है, यू कैन कनेक्ट विद योर ऑफिस फ्रॉम होम. और इफ़ यू स्टिल हैव टाइम, अगर आपका लेट आवर्स हैं, वर्किंग आवर्स हैं, तो यू कैन टेक अ नैप अगेन. जैसे मैंने आपको कहा, सारा, am I answerable to your question? Are you satisfied with the answer? Any more questions? Yes, please. Yes, definitely. It will bloat you, of course, Alina. अगर बहुत सारा पानी एक साथ पी लेंगी तो लोगों को होता है ना कि बस लास्ट मिनट रह गया है, आई हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. सो प्लीज डोंट डू दैट. जैसे मैंने कहा कि कुछ टिप्स हैं.
इलायची, योगर्ट, ये आपको प्यास नहीं लगने देती, बहुत देर तक मेंटेन करती है, आपको हाइड्रेटेड रखती है। एंड स्प्लिट करें अपने वाटर के इनटेक को, 2 ग्लास फॉर सहरी, 2 ग्लास फॉर अफ्तारी, अफ्तार के बाद जो है वो फिर 2 ग्लास या 3 ग्लास करें, उसके 3-4 घंटे के बाद फिर, तो आपका अगर 8 ग्लास बन जाता है तो दैट इज गुड इनफ, यू गुड टू गो। यस हारिस, अफ्तार में 3 ग्लास रूह अफ़ज़ा पीने से क्या सहरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है जो फास्टिंग की वजह से फैट बर्न होते हैं? एंड इज इट सेफ टू कंज्यूम दिस मच ऑफ इट? सर्टेनली शुगर कंजम्पशन इन एनी फॉर्म और वो भी इतनी अमाउंट में इज नॉट गुड एट ऑल। और सिर्फ ये यही नहीं होता हारिस, सिर्फ रूह अफ़ज़ा नहीं होता, आपके अफ्तार की टेबल पे फ्रूट चाट भी होती है, आपके आपके पकोड़े भी होते हैं, और आपके जो मीठे दही बड़े भी होते हैं। तो इन सब की जो शुगर, उसमें अमाउंट ऑफ शुगर है वो आपने देखा है कि शुगर आपके साथ क्या करती है। एज आई सेड कि वो आपको बुरी तरह से लेथार्जिक कर देगी, सडनली इट विल गिव यू अ शुगर रश एंड यू विल बी टायर्ड, यू विल बी बिल्कुल, आप जिसे कहते हैं ना, ड्रेन्ड आउट फील करेंगे। तो हैव रूह अफ़ज़ा बट इन बिट्स लें, और बिल्कुल ठंडा चिल्ड ना लें। यस, सैयद अली हसन रिजवी, हार्ट एंजियोप्लास्टी हुई हुई भी है, क्या रोज़ा रख सकते हैं और खाने पीने में एहतियात क्या करूं? यस बिल्कुल, अली साहब, आप बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, और आप अपने मेडिसिन की आपको रूटीन सेट करनी पड़ेगी। एंड अगेन आई विल कोट हियर अगेन कि आपको अपनी प्रायोरिटाइज करके अपनी रूटीन को सेट करना है। मैं बार बार इस जुमले को रिपीटेडली बोल रही हूँ क्योंकि की पॉइंट है ही रेगुलेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। तो अगर आप अपनी मेडिसिन की रूटीन को सेट कर लें कि आप सहरी में मेडिसिन ले लें और आप अपनी बाकी मेडिसिन अफ्तार में ले लें, एंड आप रोज़ा रख के देखें, और आप अपनी, सिंस यूर हार्ट पेशेंट, तो आप अपने डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं इसके बारे में। एंड एज अ डॉक्टर जैसे मैं भी आपको एडवाइस कर रही हूँ कि रोज़ा रखा जा सकता है बहुत आराम से। ओके रिदा, हाउ टू ओवरकम द नीड ऑफ चाय ड्यूरिंग फास्ट टू स्टे अवेक? चाय वाले लोगों को चाय चाहिए होती है, और कॉफ़ी वाले लोगों को कॉफ़ी। तो आफ्टर अफ्तार यू कैन हैव योर चाय ऑफ कोर्स, बट जैसे रोज़ा आप चाय से जो खोलते हैं वो अफेक्टिव नहीं है, वो आपके लिए हार्मफुल होगा। आप रोज़ा खोलें, रोज़ा खोलने के बाद हाफ एन आवर के बाद यू कैन हैव टी। एंड सर्टनली रिदा, ये आप खुद कोप कर लेते हैं, और जो रोज़ा रखते हैं वो चाय के बगैर भी रोज़ा रख सकते हैं। ओके नबील, how can one strike a balance between participating in nighttime prayers and getting enough restorative during sleep during Ramadan? Yes, okay. So, नबील देखें, हमारा सहरी का टाइम जो है वो 4:30 से स्टार्ट होता है। सो इफ़ यू हैव योर तहज्जुद नमाज, इफ़ यू हैव योर अदर दुआएं एंड कुरान पाक एंड एवरीथिंग, जो कि हमारा एक रमज़ान का जिसे कहते हैं कि एक नूर है, वो हमें करना होता है, रूटीन है हमारा। तो बिल्कुल हम ये चीज़ें जो है वो अपनी बैलेंस कर सकते हैं। अगर लाइक सी कुछ आपकी नमाज जो है वो बिफोर गोइंग टू बेड भी हो सकती है, जो आपकी अगर कोई नाफिला नमाजें हैं जैसे तरावी वगैरह है, वो तो आप पढ़ ही लेते हैं अफ्तार के बाद। एंड बिफोर गोइंग टू बेड इफ़ यू हैव, यू कैन डिवाइड इट, you can split it, so it can be easily manageable, not a big problem. Any more questions? Alina? Yes, those who suffer from PCOS are usually lazy in the routine. What shall be consumed
that can be beneficial for PCOS and does not make you even lazy. Yes, for PCOS, diet is the key and exercise is the key. I understand that after iftar, exercising is a bit difficult, but at least 10 minutes तो निकाले जा सकते हैं. Iftar ke baad, you can take out 10 minutes, you can do your tarawih and you can do your Isha ki namaz. After that, say like around 10, 11, आप 10 to 15 मिनट्स एक अपना एक्सरसाइज का सेशन कर सकते हैं विच शुडंट बी वेरी स्ट्रेनस बट एक लाइट एक्सरसाइज 15 20 मिनट्स 10 मिनट्स एक स्पैन है जितना आप निकाल सकते हैं एंड ट्रस्ट मी इट विल बी रियली हेल्पफुल जितने भी नैप्स ले लूं नींद पूरी नहीं होती एवरी टाइम फीलिंग डिजी यस आई टोटली अग्री विद दिस ऐसा होता है but देखिए as I mentioned in my session in earlier मैंने जैसे start किया था इसमें कि रूटीन को अगर आप स्लीप रूटीन को अगर आप जैसे मोबाइल देखते हुए सोने चले गए तो दिस विल कीप योर ब्रेन एक्टिवेटेड आपने चाय पी और चाय पी रहे हैं टीवी देख रहे हैं मोबाइल अपना स्क्रॉल कर रहे हैं ये करते हुए अगर आप सोने के लिए गए दिस विल कीप योर ब्रेन एक्टिवेटेड लाइक यू वांट टू स्लीप बट यू कांट स्लीप बिकॉज यहाँ से आप ब्रेन एक्टिवेटेड है दिस नीड्स टू बी again prioritized and regulated. Okay, everyone, it was really nice talking to you, and so this is all for today. And if you feel unwell, consult Sehat Kahani's expert from home using their application and connect with the doctor within 60 seconds. So download now from the link in the bio and use promo FAST20, FAST FAST20 throughout Ramadan for a flat 20% off on all your consultations. See you in the next session. Allah Hafiz for now. Allah Hafiz.